Hello and welcome. Today let's talk about the Mrinaltai Gore flyover extension in Goregaon, which has been in the news lately for all the wrong reasons. Ever since its inauguration on June 6, social media has been flooded with public outrage regarding the poor quality of construction. Now, this project has been in the works for almost 8 years at a whopping cost of around 248 crores. Yes, that's yours and my money. In 2021, the Vigilance Department of the Bombay Municipal Corporation had flagged off serious concerns about the project. This was in connection with safety violations, substandard quality of material use, and structural defects. Today, citizens want to know whether this flyover is really safe for travel. I put this question to Additional Municipal Commissioner Abhijit Bangar. This is what he had to say, and I quote, "Let me assure the citizens of Mumbai that the flyover is absolutely safe for travel. There is no way that the BMC would have opened it to the public without having done a thorough check of all the safety features. The contractor too has been fined for the project delays. I admit that we should have taken the public into confidence about the mastic asphalt before opening the flyover to them. This would have helped dispel any doubts in their minds." Unquote. Now, Mayor Ritu Tavre too has assured the citizens that the quality of construction is satisfactory. Listen in. हा मास्टिकचा एक प्रकार असतो, तो टाकावाच लागतो. एक पट्टा सुकून झाल्यावर दुसरा पट्टा आपण टाकतो. हा मास्टिकचा रोड आहे, त्यामुळे ते पॅचवर्क दिसणार. पण तरी सुद्धा हे पॅचवर्क जे आहे ते 15-20 दिवसाच्या गाड्यांच्या घर्षणाने टायरच्या तो लेवलअप होणार. Now, citizens obviously are not convinced. They want an independent audit of the project by an independent agency like the IIT. Also, they want a step-by-step action taken report on all the concerns that were flagged off by the Vigilance Department in 2021. I'm going to be using this flyover daily for my commute to work, and the top surface of the carriageway in a lot of sections is very poor, quality. There are a lot of tire marks and it's not leveled. Also, the vigilance report mentions that the M40 and N50 concrete that is used in making this bridge is not up to par. So I feel, instead of paying the contractor enhanced, money as compared to the original contractual of 170 crore, they have increased it to 248 crore. I feel we should not be paid even 170 crore because if he's used substandard concrete, the lifespan of the bridge is not going to be what, BMC has fathomed it to be, which should be at least about 3 decades. I'm extremely disappointed with the work that has been conducted here. We have been told कि थोड़े दिन में ये स्मूथ हो जाएगा, बट आई फील ये पहले स्मूदन होना चाहिए था और फिर ओपन किया जाना चाहिए था. As it is, this project was delayed. 248 crores, a delay in project, and with this outcome or this output is extremely disappointing for the citizens. On Monday, when the civic body convenes for a meeting after a brief sabbatical, opposition is gearing up, all guns blazing, to take on the civic administration as well as the ruling dispensation on this count. हमारा कहना है फाइन से नहीं चलेगा, रेक्टिफाई से भी नहीं चलेगा. जो सुपरविजन कौन कर रहे थे, बीएमसी के लोग कर रहे थे और उनके एक जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके लोग, तो अपने जो लोग हैं उनकी तहकीकात करो. उन्होंने क्यों नहीं ये सब बातें नहीं देखी, तो उनके ऊपर कार्रवाई करो. हम जितना आवाज़ लोगों के लिए उठा रहे वो उठाएंगे. जिस कंपनी को ये काम दिया गया, क्या वो कंपनी के पास उतना एक्सपीरियंस था कि इस तरह के ब्रिज के लिए काम करे, या फिर उसके पास खुद की जो क्वालिटी मॉनिटरिंग करने वाली टीम थी, क्या उनको ये बात पता नहीं थी कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? दूसरी कि वो जो लोग जो वहाँ पर बीएमसी के ब्रिज डिपार्टमेंट के लोग जो काम कर रहे हैं, वो इंजीनियर्स जो काम कर रहे हैं, उनके पास भी एक काम था कि वो क्वालिटी को इंस्पेक्शन करते कि वो किस तरह से हो रही. तो क्या फिर वो भी फेल हुए? क्या वो कंसल्टेंट जिसने इस ब्रिज की डिज़ाइन की थी, जिसने इस ब्रिज के काम को देखभाल करने के लिए पैसे लिए थे,
उसके पास भी कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं थी कि भाई ये चीज़ें इस तरह की कंप्रोमाइज़ की जा रही है, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है। कांग्रेस पार्टी की डिमांड है कि इस तरह के जो इंक्वायरीज़ है और ख़ासतौर से मिन्नाल ताई गोरे ब्रिज की, कि उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और उसके साथ साथ उस ब्रिज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हो कि भाई ये ठीक है नहीं ठीक है, उसकी पूरी जानकारी जो है पब्लिक डोमेन में डाली जाए। Now, the real test of the flyover will be during the monsoons. Till then, we'll have to wait and watch.